आपण समस्ते आम जाचे पूर्त विभाग एक पुरातन विभाग ये ब्रिटिश समय ये कार्यक्रम करुच्ची ए विभाग माध्यम समस्त राज्यर निर्माण कार्य चली वर्तमान आम ए विभाग माध्यम रास्ताघाट विकास करने सहित कोठाबाड़ी निर्माण कार्यक्रम चली कौन सी राज्यर कौन सी देशर विकास जिते गमनागमन पथ विकास हम से विकास हेले राज्यर विकास हम से परिप्रेक्षी आम राज्यर जिते 2000 मसीहा पूर्व आम राज्य पूर्त विभाग द्वारा प्राय 16,041 किलोमीटर रास्ता थिला एवं आज माननीय मुख्यमंत्री दायित्व नेला परे वर्तमान ता 31,317 किलोमीटर रास्ता अच्छी ए जातीय राजपथ राज्य राजपथ प्रमुख जिला रास्ता अन्य जिला रास्ता अच्छी आमर रास्ता प्राय द्विगुण हो 2000 मसीहा पर ए रास्ता द्विगुण हो आमर बजेट 2001 मसीह आमर थिला 298 कोटी वर्तमान 2023-24 प्राय 9,500 कोटी रे पहुँची ये प्राय 30 गुण रु अधिक बजेट वृद्धि पाई से हिसाब से कार्यक्रम चली आम शून्य आधारित बजेट उपर 22-23 मसीह 32,214.51 कोटी टंकार व्यय बराद 48 सेतु 3टी आरओबी 1560 किलो रास्तार उन्नतीकरण लक्ष्य रखा जाइथिला से 26टी सेतु 2टी आरओबी गोटे फ्लाईओवर 20टी चेक डैम एवं 818.03 किलोमीटर रास्तार कार्यक्रम समाप्ति होती से भली नाबार्ड सहायतार आरआईडीएफ स्कीम अधीन 2022-23 वर्ष 700 कोटी टंका बजेट व्यवस्था माध्यम 9 गोटी सेतु एवं 200 किलोमीटर रास्तार उन्नति लक्ष्य करा जाइथिला से 9 गोटी सेतु एवं 130 किलोमीटर रास्तार कार्य संपूर्ण करा जाइछि 2022-23 वर्ष सड़क विकास कार्यक्रम अधीन 2533.50 कोटी टंकार बजेट व्यय बराद 33टी सेतु 3टी आरओबी एवं 1140 किलोमीटर रास्ता एवं नूतन प्रकल्प हाथ नापी लक्ष्य रखा जाइथिला या फल 590.90 किलोमीटर रास्तार उन्नतीकरण कराई 16टी सेतु 2टी आरओबी एवं गोटे फ्लाईओवर समाप्ति करा जाइछि 2022-23 वर्ष पश्चिम ओडिशा और केबिक जिला दे जगदलपुर को राउरकेला सहित संजोग करने 638 किलोमीटर दीर्घ विशिष्ट विजु एक्सप्रेस वे अधीन सोहेला ठारू आमपाणी पर्यंत 294 किलोमीटर रास्ता को 4 लेन विशिष्ट करने 300 कोटी टंका बजेट व्यवस्था कराई प्रकल्प मार्च 23 सुधा समाप्त आपको माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन कर प्रकल्प माध्यम पश्चिम ओडिशा को विकास जो पश्चिम ओडिशा को आम अवहेलित कहला यही प्रकल्प द्वारा पश्चिम ओडिशार विकास हेब एवं विभिन्न यही कॉरिडोर मध्य विजु एक्सप्रेस कॉरिडोर मध्य अनेक इंडस्ट्री कार्यक्रम हाथ में यही रास्ता विशेषत्व है जे आम या प्रत्यक्ष भूमि अधिग्रहण द्वारा सठिक समय कार्यान्वयन समुदाय 1538 एकर भूमि अधिग्रहण आवश्यकता थिला बेले 1416 एकर भूमि सीधा सड़क किणीचु आम उक्त अंचल जमी मालिक मान सहयोग एवं यही प्रत्येक क्रय जो भूमि अधिग्रहण कार्य स्वल्प समय मध्य संपन्न होती आम इंजीनियर माने एवं कलेक्टर अन्य जो मैंने अफिसर्स अच्छा बहुत सहयोग कर लोक सहित लोक धन्यवाद देवा साधारण लोक से सहयोग आम डायरेक्ट परचेज कर सरकार निष्पत्ति कर ब्रह्मपुर जयपुर पर्यंत विजु एक्सप्रेस को डेभलप करने संप्रसारण कॉरिडोर प्राय 330 किलोमीटर रही प्राय 6,800 कोटी टंकार व्यय बराद करा
सेहीभଳି आपन जानिछन्ति स्वाभिमान अंचल विकास पय आमे गुरुप्रिया सेतु कार्यक्रम करिथिलु एवं वर्तमान यही अंचल प्राय 308.90 कोटी टंका व्यय 184.87 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट 11टी रास्ता प्रकल्प एवं 3 गोटी सेतु प्रकल्प कार्य हाथ नहीं एमध्य 249.26 कोटी टंका व्यय 168.86 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट 6टी रास्ता प्रकल्प कार्य प्राय शेष हो जाए। स्वाभिमान अंचल जो आवश्यकता था ताकू आम विभाग अति निपुणता सहित से कार्यक्रम 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 करुछि। विभिन्न नदी उपरे ब्रिज करी आमे संयोग स्थापन करुछु। बहुत मेजर ब्रिज संबलपुर जिला नेशन मंडल छकटे महानदी उपर निर्माण सेतु, कटक जिला गोपीनाथपुर महानदी उपर टी सेतु, कटक जिला जातिमुंडिया ठारे महानदी उपर निर्माण सेतु, कटक जिला काठगोड़ी नदी उपर नेताजी सुभाष बोस सेतु, झारसुगुड़ा जिला रेंगाल ठारे ईब नदी उपर सेतु, ढेंकानाल जिला ब्राह्मणी नदी उपर बाजीराउत सेतु, जाजपुर जिले में जेनापुर ब्राह्मणी नदी उपर सेतु, ये अनेक सेतु आम करूँ अनेक सेतु कार्यक्रम बर्तमान चली ओडिशार गमनागमन सुजोग सृष्टि करने एवं आपण मैंने जानी आम केबिके जिला पश्चिम ओडिशार केबिके जिला दे जगदलपुर को राउरकेला सहित संयोग करने 638 किलोमीटर दीर्घ विशिष्ट विजु एक्सप्रेस कार्यक्रम सरी जाइए। 2022-23 अबढ़ा योजना अध्ययन आम प्राय 2324.92 कोटी टंका बजेट व्यवस्था कराई। ऐतिह्य सहर पुरी को एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थली में परिणत करने उद्देश्य यह रखा जाइथिला। अबढ़ा योजना अंतर्गत प्रकल्प गुड़ विभिन्न अग्रगति होउछि। यथाशीघ्र यही प्रकल्प गुड़ शेष आम करूँ। 2022-23 ऐतिह्य और स्मारकी एवं पर्यटन स्थल समन्वित विकास अधीन 150 कोटी टंकार बजेट व्यवस्था रही। पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िक अनेक कार्य तथा माँ तारिणी पीठर विकास, कुमारक ऐतिह्य अंचल विकास, माँ कटक चंडी मंदिर समन्वित विकास, श्री नीलमाधव मंदिर कम्प्लेक्सर विकास, माँ शारदा योजना इत्यादि विभिन्न स्तर में कार्यकारी हो। 2023-24 वर्ष में भोटिंग प्रोविजन व्यवस्था हो 9452.5404 कोटी एवं बजेटर चार्ज प्रोविजन व्यवस्था हो 20,4616 कोटी टंका। रेवेन्यू सेक्टर प्रतिष्ठान परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण अधीन सर्वमोट व्यवस्था 2465.0020 कोटी टंका एवं कैपिटल सेक्टर कार्यक्रम अंतर्गत सर्वमोट व्यवस्था हो 7008.00 कोटी टंका। 2023-24 बजेट व्यवस्था माध्यम निर्माण विभाग 3000 किलोमीटर रास्ता उन्नतीकरण गुणवत्ता सहित दोहरीकरण हो। विजु एक्सप्रेस द्वितीय पर्याय ब्रह्मपुर ठारू जयपुर पर्यंत 300 किलोमीटर 4 लेन विशिष्ट हम। 9टी प्रमुख सेतु आरबी गुड़िक संपूर्ण भाव स्थिर एसहित 4500 कोटी टंका व्यय एससी मेडिकल कॉलेज विश्वस्तरीय स्वास्थ्य भित्तिभूमि 5300 कोटी टंका व्यय 5टी मेडिकल कॉलेज, 9टी शिक्षादान हॉस्पिटल, 10टी मुख्य डाक्तरखाना एवं 10टी कैंसर केयर हॉस्पिटल निर्माण दायित्व नहीं। निर्माण विभाग 680 कोटी टंका व्यय विभिन्न महानगर निगम एवं विज्ञापित अंचल परिसर मानक 89टी इंडोर स्टाडियम कार्यक्रम चालू रखी। एतद्व्यत आम जो सरकार जो प्रतिश्रुति देते प्रति ब्लॉक रे 2 लेन विशिष्ट रास्ता निर्माण पदक्षेप ग्रहण कर ओडिशा थिबा समुदाय 314टी ब्लॉक मध्यरु 304टी ब्लॉक को दोहरा रास्ता निर्मित कार्यक्रम सरी। अवशिष्ट 10टी ब्लॉक दोहरा रास्ता कार्यक्रम चालू रही। 2टी लेन विशिष्ट रास्ता गुड़िक संयोजक पर्यटन स्थली पर्यंत जो व्यवस्था था 29टी चिन्हित पर्यटन स्थली मध्यरु 9टी पर्यटन स्थली बर्तमान 2टी लेन विशिष्ट द्वारा संयुक्त हो सारी। अन्य पर्यटन स्थली गुड़िक 2 लेन विशिष्ट रास्ता द्वारा खूब शीघ्र संयोग करा जहाँ आम सरकार प्रतिश्रुति देते करने। 2 लेन विशिष्ट रास्ता द्वारा शिल्पांचल को संयोग करने 75टी शिल्पांचल मध्यरु 59टी शिल्पांचल को 2 लेन विशिष्ट रास्ता द्वारा संयुक्त हो जाए। अवशिष्ट 26 शिल्पा निमंते दोहरा रास्ता कार्यक्रम चालू रही। विभिन्न सहर
रिंग रोड करने पूर्त विहार कटक ब्रह्मपुर भद्रक बलांगीर बरगढ़ और भवानीपटा रिंग रोड विकास निमंते पदक्षेप ग्रहण कर विभिन्न शहर में बाईपास व्यवस्था कराई विभिन्न प्राय 24 बाईपास निर्माण निमित्त योजना कार्यक्रम चली निजुक्ति उक्त प्रदर्शनकारी आसफाल्ट स्ट्रेस अब्जर्विंग मेम्ब्रेन इंटरलेयर सामी निम्न भागरे तथा निम्न ठारू उपर स्तर में सीमेंट माध्यम या सुदृढ़ करने निमित्त आर्द्रता प्रतिरोध प्रस्तुत ऑक्सीसाइलेन नानो कंपाउंड टेक्नोलोजी परी नूतन टेक्नोलोजी एवं शीतलीकृत पिचु मिश्रण प्रयोग रास्ता निर्माण कार्य कर टेक्नोलोजी आम व्यवहार करुँ सेहीपरि कटक रिंग रोड निर्माण निमंते काठयोड़ी नदी थिबा नदीबंध सुदृढ़ करने राज्य जिओसेंट्रिक व्यवहार करुच्ची जिओ मेम्ब्रेन जिओ ग्रिड एवं जिओ सिंथेटिक रिटर्निंग वाल सिस्टम व्यवहार कराउची प्रिफाई विकेटेड ऑप्टिकल ड्रेन गुड़ी को व्यवहार करी ग्राउंड इम्प्रूवमेंट करा जाउची मरामती एवं रक्षणाबेक्षण निमंते राज्य कोल्ड मिक्स प्रीमिक्स पद्धति अवलंबन करुच्ची कोल्ड मिक्स टेक्नोलोजी प्रयोग करी रास्ता निर्माण निमित्त विभाग योजना प्रस्तुत करुच्ची एहिभଳି भाବରେ ओडिशा राज्यर विकास करने कृत विभाग पक्षर आम जो बजेट व्यवस्था रही से बजेट्र आम सबुबले बजेट आम सबुबले बजेट को संपूर्ण जी व्यवस्था रही सब खर्च करने बजेट्रे आम देखीचु गत विगत वर्ष प्राय 99-95% सब खर्च होती ए वर्ष आम चेष्टा करुँ 100% खर्च करी ए राज्य को विकास करने जो आम प्रतिश्रुतिबद्ध सरकार आम विभाग सब आप जानते क्वालिटी कार्य करिमारे तार ना अच्छी सारा भारत वर्ष में विभिन्न भारत सरकार विभिन्न अनुष्ठान आम प्रशंसित होती आमर इंजीनियर माने सब परिश्रम करी अनेक प्रत्येक जगह परिदर्शन करी अनेक कार्यक्रम सब कि विभाग सुनाम रहिबो विभाग जो सुनाम आदि बजाय रही से करने सब चेष्टित रही मुझे आशा करी यही कार्यक्रम राज्यर साधारण लोक ये कार्यक्रम जहाँ कर्तव्य नहीं निश्चित भाव में राज्य लोकों हितपाई कार्यक्रम कर ये आशा करी मुझे आशा करुच्ची आपण समस्ते सहयोग कामना करुच्ची जे विभाग कि आहरी अधिक लोक कार्यक्रम कर आपण सहयोग नितांत आवश्यकता अनुभव करी आज वक्तव्य शेष करुच्ची धन्यवाद। हमर जो पूर्त विभाग बजट अच्छी कौन कौन प्रायोरिटी काम टेकअप करा जीवो और आमे यही लास्ट 2 डिकेड ऊर्ध्वे कितने आमे अचीवमेंट करी सेटा आपण माननीय मंत्री महोदय पाखु शुणिले मु जस्ट क्विकली आपण को गोटे प्रेजेंटेशन रे नहीं के जीवी प्रथमटा आई विल इंट्रोड्यूस व्हाट वर्क्स डिपार्टमेंट इज Works department is concerned with construction of roads, construction of bridges, construction of buildings, maintenance and repair of extensive road network in the state, maintenance and repair of buildings, improvement and maintenance of national highways in the state. Amaro ei 2 decade pakha jodi if we look at it, amaro total 31,317 kilometers of important roads of the state are maintained by the works department. What Honorable Minister said, in last 2 decades plus, the extent of road network in the state under Works Department has almost doubled from 16,041 kilometer to 31,317 kilometer. Besides roads and bridges, we are also doing building construction and maintenance of buildings. So mainly building constructions relating to own works department, then our major infrastructure are medical colleges, Adarsh Vidyalaya, court building, sports infrastructure. So all these buildings also we are constructing, and along with that we also maintain these buildings. For number's sake, the total area which is being maintained by works department today is 1,28,70,885 square meter of plinth area is maintained by works department.
Budget, on budget, if I have to say, mainly this year our total budget is about 9,133 crore. Honorable Chief Minister has been laying lot of stress on building quality infrastructure in the state. And the growth compared to last year in this year's budget is about 9%. That's the total budget which we are talking about. Along with this, we must also appreciate that this is not the only work which Works Department does, because we also get deposit works from other department. Health Department deposit works will be there, Sports Department deposit works will be there, then Education deposit works will be there. So once we compare that, it is almost the double of this we are executing the infrastructure. Airstrips also we are doing. So all these projects put together, we are executing almost double the quantum of works what is there in the budget. So those deposit works do not get reflected in Works Department. Now, even under maintenance also, because creating an infrastructure and not maintaining is again not the right spirit. So even under maintenance head, there is a 12% growth over last year. So this is where our total budget numbers they stand. Going into the important heads, what we will be executing this year. Under state sector road development program, we have an allocation of 4,600 crores for in 2023-24. Last year it was 1,890 crores. Now this will be used in improving 3,000 kilometers of roads and 9 number of major bridges. So mainly this will be used in improving 3,000 kilometers of road, making them double lane standard, and 9 number of major bridges. Along with this, certain important projects which will be taking up is 6 laning of Cuttack Ring Road, improvement of Taldanda Canal Road, 4 laning of Cuttack Paradeep Road, maintenance of it, 4 laning of Kapila Prasad Jatni Road, new 4 lane connectivity to Parlakamundi, bypass. Now as the towns are growing, we are feeling that the roads are getting choked. So there is an urgent necessity to develop ring roads around important towns and cities of the state. So we have a provision to construct ring roads around Barampur, Bolangir, Sambalpur and other places in this state also. Besides this, there will be a bridge over river Katjodi at Trisulia, river Baitrini at Chandbali, and Anandpur over river Brahmani at all, and construction of 6 lane road along Daya West Canal in Bhubaneswar city will also be taken up during 23-24. Another important announcement which Honorable Chief Minister had made, and all of you are well aware of it, after successfully completing Biju Expressway, 175 kilometer of divided highway 4 lane, now state has decided to construct Biju Expressway 2, which will be connecting Barampur to Jaipur. And this we have already started the land acquisition work. So 100 crore has been kept in the provision, but this will again be augmented as and when funds will be required. Near about 6,000 crore will be spent on Biju Expressway 2 to make it double lane divided highway with a speed of 80 km per hour, and in Ghat section it will be about 50 km per hour. Then another important scheme of the department is integrated development of heritage and monuments and tourist destinations. For this, we have an allocation of 158 crores. Important heritage sites, Konark, Ma Sarla, Ma Katak Chandi, Neel Madhav, Shikhar Chandi, Alarnath Peeth, these will be developed in coming 23-24 under this head. Very important scheme of the department is Abda, which Honorable Minister also in his opening remarks said to make Puri as a world-class heritage city. So there we have an allocation of 223.98 crores, so which will be utilized in completing the projects which are going on in Puri. Sri Mandir Parikrama project, Sri Setu, JBPC, revival of Musa River, heritage ponds, and development of beach front. This MLCPs, Tinta Jagare jo amro chali chi. So all these projects will be completed utilizing this allocation.
Under RIDF, there is a budget provision of 698.50 crore. That is for improvement of roads and construction of bridges in rural areas of the state. Utilizing this money, we'll be constructing 8 new bridges and 220 kilometer of road length will be completed. Besides this, every time it's very difficult for us to judge which road requires maintenance, which bridge requires maintenance, what is the condition of the bridge. So in order to have a scientific approach for road maintenance and bridge maintenance, we have roped in services of CRRI, who will help us in guide us in scientifically maintaining the roads as well as the bridges. This was just the brief of what is there and important projects which have important heads which have been kept in the budget of 2023-24. Now going into the achievements of 2022-23, as I said earlier that Honorable Chief Minister's vision is to have a high quality infrastructure in the state. So during this year, we have improved 1,000 kilometer of road length, 28 bridges have been completed and 2 number of ROBs and 1 number of flyover has been completed. Then Biju Expressway, which I said connecting Nuapada to Ambapani, that has been completed. Bridge at Bodh over river Mahanadi has been completed. Bridge over Mahanadi at Atmallik, flyover bridge at Lakshmi's Talkies Square in Sambalpur city, all these have already been completed. What Honorable Minister said in his remarks, giving 2-lane good connectivity to block headquarters is a priority. And 304 number of block headquarters have already been connected by 2-lane good quality road. Balance works are also in progress and will be completing it by end of this year. The major building projects which are in progress is the world-class health infrastructure of SCB Medical College, Cuttack, 5 number of medical colleges, 9 number of teaching hospitals, 10 number of district headquarter hospitals, 10 number of cancer care hospitals, 89 numbers of multipurpose halls which are the sports stadiums, indoor sports stadiums. In my opening remarks, what I said that Works Department is not doing the works only which are there in the budget. They also take deposits from other departments, DMF, Ombardsi also, and those projects are also being executed by the Works Department. If I go to the major achievements in last 2 decades, what Works Department has been able to create an impact in the state. The road length, we have been able to almost double the road length from 16,041 kilometer to 31,318 kilometers road length. What Honorable Minister also said in his remarks that budget which was 298 crores during 2000 and 2001 has increased to now almost 9,500 crore in 2023-24. You would also appreciate that this 298 crores was 2% of the allocation of the budget in that year. And today 9,500 crore is 4% of the budget allocation. So budget allocation not only has grown in numbers, but as percentage of the total budget also, the infrastructure has been given huge priority in the budget. The major road corridors which we have been able to complete in last 2 decades have been 4-laning of Sambalpur-Rourkela Road, 163 km, Cuttack-Paradeep CC Road, 82 km, 2-lane road of 304.5 km under Odisha state road projects, which are Bhawanipatna-Khariyar Road, Anandpur-Bhadrak-Chandbali, Barampur-Taptapani, Jagatpur-Chandbali. 2-lane road of Vijayawada-Ranchi corridor of about 1,200 kilometers, Motu of Malkangiri to Tirunga of Mayurbhanj have also been. Some of the major bridge projects which have been completed. Our state is crisscrossed with a large number of rivers. And hence, in order to have a complete connectivity, bridges form an important part of it. And many of the bridges are very, very large size bridges which we are executing. The most important one, as you are well aware, is the Gurupriya Bridge, which has been completed in Malkangiri district, which has given full connectivity to Swabhiman Anchal. Then Nelson Mandela Square Bridge on river Mahanadi in Sambalpur district has been completed. T Bridge at Gopinathpur over river Mahanadi in Cuttack district, Madhusudan Setu over Mahanadi in Cuttack district, near Jatamundia over Mahanadi in Cuttack district, Subhash Bose Setu over Katjodi in Cuttack district, near Rengali over river Eb in Jharsuguda district,
Bajirao Setu over Brahmani in Dhenkanal district, near Jainapur over Brahmani in Jajpur district, near Shankara Sai over Bilwa Khai in Jagatsinghpur district, near Gumuda over Bansadara in Raigada district. These are just to name a few the bridges which have been completed by Works Department. Thank you.